Hello, everyone. Welcome to another episode of Late Night Rants. Before we go ahead with introducing the topic for today's discussion, Anukul and I would like to thank each and every one of our listeners for regularly tuning into our podcast because we have recently reached our first significant milestone of 1,000 plays on the Anchor app. Yay! And Thank you guys. Thank you. And we are nothing but full of gratefulness to everyone who has supported us in this very small but significant venture of ours. Yeah. So, the topic for today's discussion is triggered by a conversation that I had with a friend of friend at a party, obviously pre-COVID, who had recently returned back from Canada after his master's. And he had nothing but a bunch of complaints against how things function in India. He had told me that before his plane was about to land in India and it was hovering over the Delhi airport, a friend of his that was sitting next to him said, हाँ यार अब लग रहा है इंडिया में आ गए हैं क्योंकि कपड़े बाहर सूख रहे हैं. And I was like, I didn't think that it was such an odd thing. But then these small things, in addition to the bigger things, I think make up for the cultural divide that exists between India as a developing third world country and some of the Western developed first world countries, which is exactly what we are going to be talking about today with two of our very special guests. Our first guest joining us from London is our very beloved college senior who has agreed to come on the podcast on the condition that he will not be referred to as sir. And if you have been following us on Late Night Rants, you know how difficult it is. So, welcome to the podcast, Sarthak. We will start with the change here. Welcome, Sarthak. Wonderful, guys. Welcome, Sarthak. Thanks, Anukul. Thank you guys for having me. Big fan. I have heard all your podcasts and especially Bonfire series. बहुत अच्छी है. Please do more of those. Oh, thanks. Thanks, man. Our second guest joining us from Windsor, Canada is my longest surviving school friend from Dehradun, who has just woken up, by the way, because it's like 8 o'clock there. And I feel very bad for doing this to her, but it's the only way we could have managed 3 different time zones at the same time. So welcome to the podcast, Gauri. Hello guys. Thank you. Thank you for having me. That's my adulting life, you know. I have to wake up anyways itni jaldi kaam ke liye. So it's okay. It's nothing new. Also, Gauri, it's the first time Vijay has introduced someone as longest surviving. I don't know why, but it's like all of us the rest of us are dead. I can relate. Like she's actually right. She's one of my longest surviving friends. So the first thing that I want to ask both of you is, obviously you were the first ones to go abroad. Like you were not born and brought up there, and both of you went for different reasons. What was the transition like? As in, even now when we go to visit a place, say just for a vacation, as soon as you land there, as soon as you go there, हवा बदल जाती है थोड़ी सी. If you get what I mean. So basically हवा कैसे बदली? Okay, so for me, मैं इधर undergrad करने आई थी. So, and the reason I came here was because my sister was already here. वो भी undergrad करने आई थी. So my parents decided, and they asked me a simple question, जाना है या नहीं? And I was like, okay, you know what, जाके देखना चाहिए. So I started my journey from there. उसके बाद जब मैं इधर आई, I had a lot of expectations. So freedom सबको चाहिए होता. I was 17 when I came here. So looking for freedom, excited, thrilled. And you know how it is, like, ऐसा बोलते हैं इंडिया में कि ओ फॉरेन कंट्री में पार्टी होती है तुम्हारे मजे हैं, you know, all that concept. So I came here with all that concept in my mind कि ओ मुझे बहुत मजा आने वाला है, and you know कोई रोकने वाला नहीं है, it's all me और independent होंगी. But then when I came here, so the first 2 weeks I felt lost. Even though मेरी sister इधर थी, I just felt lost. I had to talk to different random people, and me being an introvert, it's hard for me to like even start a conversation with somebody. So वो सब मुझे पहले 2 दिन में ही सीखना पड़ गया था. Like I had to reach out to different people. Second thing was the accent. So you know how हम इंडिया में English सीखते हैं, but हम उतनी fluency नहीं होती है हम लोगों को
तो जब यहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते थे तो मुझे टाइम लगा उनको रिस्पॉन्ड करने का, लाइक रिस्पॉन्स टाइम डिफरेंट था, बिकॉज मुझे उनका एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा है. दिस हैपेंड फॉर अ मंथ कि नहीं समझ में आ रहा है, आई हैड टू टेल देम, ओ कैन यू प्लीज रिपीट. और embarrassment भी होती थी because I thought I was left out, like I did not know how to settle in. I thought मैं कभी English like इन लोगों से interact नहीं कर पाऊंगी because English समझ ही नहीं आएगी. And third thing was it was actually nice to have freedom. Finances भी खुद manage करना. You have to see कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं. If you want to reach out to your parents, you want to check. Like कोई आके check नहीं करेगा. और ये सब हमें नहीं सिखाया जाता इंडिया में. Finances तो I think हम manage करते ही नहीं है. Like that's one of the things our parents manage at that age. So that was a big transition for me. And one little thing that I noticed was so either everybody holds the door for like the other person or like it waits for the other person. So I had to learn that. That was gonna be, sorry to cut you off, that was gonna be one of the points that I was going to mention as well. हर कोई door पकड़ के खड़ा है. They are trying to be sweet, but it's putting pressure on the person behind you क्योंकि अब if I'm 10 steps away, I have to run because oh shit, उसने door पकड़ा हुआ है. क्यों pressure डाल रहे हैं यार? Okay. I was just walking normally. ऐसे ही रहना पड़ेगा. And sorry and thank you is like I don't know. It's like drinking water. Like it's that common. Just have sorry, thank you. So yeah, I think Canadians are like even stereotypes of being like too sweet. But yeah, then they are. I tried to talk to, like, I was talking to a Canadian guy once on Instagram, and like we had like a few chats. And uske baad, I said, like, with every chat I used to say bye, 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 bye. And he was like, I forget that English is not your native language and like it's not natural to you. And I was like, and because I was in the impression कि excuse me, IELTS के diagnosis test में मेरे ऐसे 7.5 आ गए थे. What do you mean? और उसके बाद he was like कि no, because bye is like finality of things. It's like bye. And so here we say see you. Yeah, here you say see you and stuff like that. And I was like, oh, okay. Our English has always been very transactional. Yeah. At least if you're not from South Delhi, South Bombay, we use English when. For us, English is a tool to say official things and to argue. Not to talk about some deep emotion or exactly. Have a conversation. And to not address someone as sir. That's the easiest way. You is you, na. There's no tum or aap or tu. You is you. Exactly. I moved here because of my job. Typical वही की client project है and उसके लिए I moved here. And this was my first international experience. मैं पहली बार international flight में यहीं आने के लिए बैठा था. तो everything was new and research भी उसी हिसाब से की थी कि I read articles about how is it like to go to London for the first time. So there were some rules of the city that I had to get used to. अगर तुम escalator पे हो तो you always have to stand towards the right and people walk on the left. If you are standing on the left, you will be abused at. तो ऐसे rules और these door खोल के खड़ा होना हमारे हिसाब से it's not rude. अगर मैं जल्दी में हूँ, I open the door and I walk away. It's not rude. It's okay. Like you need to take care of yourself. But यहाँ पे you have to stand. If someone is behind you, you have to stand holding the door open. And अगर वो बंदा 10 feet दूर भी है, now that is the judge. That is where your judging power comes into place. कि अगर वो 10 steps दूर भी है, तो मैं खड़ा हूँ या मैं चला जाऊँ. आधे से ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं. The person behind now has an added pressure कि walk faster. कोई sweet बंदा चल रहा है. पता नहीं इतना टाइम कैसे लोगों के पास, पर ये बहुत होता है. And ये चीज used to हो गया. Then again, Gauri also mentioned sorry, thank you. I think both of us are in countries which are very sweet. क्योंकि बदतमीज शायद यूएस के है. ब्रिटिश और कैनेडियन तो बहुत स्वीट है. तो सॉरी. इतना मतलब अगर ग्रोसरी स्टोर में हम दोनों की बास्केट टच हो गई तो वो भी सॉरी बोलेगी, मैं भी सॉरी बोलूंगा. क्यों, किसकी गलती थी पता नहीं. सॉरी बोलते रहते चल रहे. Then so these were good things. जो city के rules थे which I had to get used to. Then the problem was created by Bollywood's
the that Portrayal. image that Bollywood had created, Age वो of. रणबीर कपूर ने जो दिमाग में डाल दिया था, मतलब of course I was not expecting all that, but कहीं ना कहीं at the back of my mind वो था. तो एक बहुत funny incident हुआ. I moved into शुरू के 1 week में I moved into this flat. I had 3 other flatmates, सब यूरोपियन या ब्रिटिश. तो मॉर्निंग में जब मैं अपने रूम से बाहर निकला तो जो स्पेनिश लड़की रह रही थी, शी इज रोमिंग अराउंड द हाउस इन हर अंडरवेयर, एंड आई गॉट अ लिटिल थोड़ा सा ऑकवर्ड. आई मूव टू द बाथरूम, मतलब सॉरी बोल के मैं निकल गया. बट उस दिन ऑफिस जाके मैं पूरा दिन बस ये सोचता रहा कि यार ये कंट्री क्या कूल है यार, इज दिस समथिंग आई हैव टू गेट यूज्ड टू. मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम गेटिंग यूज्ड टू दिस, बट शिट इट वाज राइट, पीपल हियर आर सो कूल. ऐसे फ्लैटमेट्स, मतलब ये क्या है. टर्न्स आउट ऐसा कुछ नहीं था. वो बस भूल गई थी कि घर में कोई न्यू मेंबर मूव इन हो गया, तो सुबह ऐसे घूम रही थी. We had a conversation. वो नॉर्मल, ये नहीं है कि दूसरी कंट्री में सब लोग नंगे घूम रहे हैं. पता नहीं, इतना ऐसा नहीं है कि गर्ल्स आर इजी है, पता नहीं कुछ भी, बट कहीं ना कहीं दैट वाज देयर एट द बैक ऑफ माय माइंड. तो वो क्लास है तभी हो गया था. ऐसा कुछ नहीं, जैसा इंडिया में वैसा यहाँ पे. इनफैक्ट जैसे दिल्ली या मुंबई में वैसे ही यहाँ पे भी है. ऐसा एक्सपेक्ट करने की जरूरत है नहीं. So my next question is going to be, did you intentionally make efforts to change yourself to fit in? For example, when I'm talking to Gauri and she's taking an order from McDonald's and she's in the drive-thru and she's placing her order and she's talking to me in English only, but suddenly when she's placing her order, I can see कि थोड़ा सा accent automatically change हो गया है. And वो उसके दिमाग में automatically हो रहा है बिना कुछ सोचे ऐसे. So, but when you first moved in, were there like intentional efforts that you made कि हाँ अब मैं नहीं हूँ इंडिया में, अब मुझे अलग से behave करना है? Yeah, I did make some intentional changes, but on specifically that accent thing that you mentioned, first of all, I didn't know I have an accent because मतलब दिल्ली में जैसे इंग्लिश बोली जाती है, and if I'm able to speak English this fluently, I'm like I don't have an accent. And accent is जब Indians को बोला जाता है ना कि he is like talking like this and I am going to go like this, तो ये वाला accent is for me कि किसी बंदे का इंडियन accent है, that's thick Indian accent. हाँ, पर यहाँ पे आके वो काफी जल्दी पता चल गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि I was speaking to this guy, this Portuguese guy at the nearby cafe, and he asked me कि are you from India? तो I said yeah, तो फेस देख के पता नहीं चल रहा है. I had that signal ki, of course I'm from India. कहता है no, actually from your accent. And I actually took offense. accent तो था ही नहीं मेरा, इसको मेरा accent क्यों लग रहा है, क्योंकि जब कोई accent बोलता है तो वो Indian accent ही दिमाग में आता है. तो मे भी मुझे एक मिनट के लगा कि शायद मुझे नहीं पता चल रहा है, पर शायद मैं इंग्लिश ऐसे ही बोलता हूँ यार. वो जो फनी इंडियन accent का सब लोग मजाक उड़ाते हैं कॉमेडियंस, वो शायद मेरा accent है. तो बीच में शुरू में वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हुई थी. वो I intentionally didn't make any efforts to change that क्योंकि I don't know, हो नहीं पाया शायद. But I know friends who switch accents, just like we just saying कि Gauri is able to switch accent. I think that's because she moved there quite early. So she was 17, 18. So she had more time. मेरे को यहाँ 2 साल हुए हैं. If I go back to India with an accent after spending 2 years here, तो गालियाँ ही मिलेंगी. तो it's good I didn't pick up accent. I think it's good. कुछ लोग, if you're staying in some country for that long, प्रियंका चोपड़ा ने ठीक किया if she's picked up an accent. When you're speaking to someone in their accent and you're understanding their language, it's easier for them to also have a conversation with you. And you know, हर 2 मिनट बाद sorry what, हाँ ये सब नहीं पता था. Able to understand. A no here is a now. So now is not now, a no is a now. This kind of stupid thing avoid हो जाती है if you pick up an accent. तो ये काफी होता है. मेरा इनफैक्ट कहीं पे एक फ्रेंड है वो बहुत ही comfortably smoothly switches accent, and उसका रूममेट ईस्टर्न यूरोपियन है. वो खुद उसको बोलता है कि dude, do you not see you talking to me in an accent, you pick up your phone, कोई इंडियन बंदा है सामने, accent ही चेंज हो जाएगा. इंग्लिश ही है लेकिन accent ही चेंज हो जाएगा. तो वो स्मूथली कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, but I don't think it's wrong. गौरी, I think मेरा ट्रांजिशन उतना स्ट्रांग नहीं था एक्सेंट में, बिकॉज कनाडा में more than half of the population different countries से like immigrants हैं, because you know इधर से लोग पढ़ने आए. So इधर
nobody judged you. Like एक होता है ना, I can tell कि US में for some reason people tend to change accent because judgmental भी होते हैं लोग. इधर किसी ने judge नहीं किया कभी. Like you know, even if I have that weird accent or anything weird for them because हम लोगों का first language नहीं है, but यहाँ पे लोग समझते थे. Like some people even thought कि मुझे शायद English आती ही नहीं है because मैं India से हूँ. उनको ये concept नहीं पता था कि हम बचपन से English पढ़ते हैं. So वो थोड़े उस चीज में होते थे कि वो शायद समझ में नहीं आएगी. So वो अपनी English थोड़ी सी broken करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं and all that. But I didn't take it as an offense. But I think one change in me was, so अभी मैं हिंदी में बात करती हूँ और मैं randomly English पे switch हो जाती हूँ. So that's I think because of habit. Like मैं दोनों mix करके बोल रही होती हूँ. And then one thing that my friends in India pointed out, I don't know Vijay if you were there for that, but मैं एक point था, मैं जैसे कोई भी sentence बोल रही हूँ ना, I would say right at the end कि okay आज class इतने बजे right. So that became one of the changes that people thought कि मैं intentionally कर रही हूँ, but to be honest यहाँ पे वो आदत पड़ गई थी, पता नहीं क्यों. थोड़ा सा accent change होता है I think, but I think दो टाइप के होते हैं, एक naturally होता है, एक intentionally होता है. So like you mentioned Priyanka Chopra, ऐश्वर्या राय बिना foreign country में रहे accent मारती है, right? Like I have seen her talking in accent. So चार इंडियन लोग बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में बात कैसे नहीं जाएगी? सही बात है. और like क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे ना, I wonder, I'm like ये इतना तो like over दिखा रही है, ये इतना transition नहीं होता है, like and I can imagine London का accent, like you were from London Sarthak, so वहाँ का accent काफी different है वहाँ का English. So I can imagine कि अगर लोग वहाँ के accent को adapt करें, but Canada में similar ही है because as I said mostly international लोग होते हैं इधर and सबके accent different है English के. Okay, I have one more thing to add. The intentional change I made, I had to. That was in general, how cool are you with the culture here? I think I am very progressive. Of course, some sabhi hai kuch mein. But that level of progressiveness was not enough. A person in my team, so this guy was 2 years younger to me, 22, 23 ka hoga. And he comes to office Monday and announces in the team stand-up ki, yeah, me and my girlfriend are having a baby. Everyone like congratulating, and the first thing that comes out of my mouth is, oh wow, congratulations. So when are you getting married? And that was थोड़ा सा अजीब because he wasn't. और ऐसा नहीं है कि मैं कोई पुराने ख्यालात का हूँ कि अरे अब बच्चा हो रहा है तो शादी भी हो गई है. बस वो इंस्टेंट उस टाइम आ गया यार मुंह से बात कि शायद प्लान कर ही रहा होगा. हाँ, मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिवनेस वाज कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उसका बेबी पहले भी हो रहा है बिफोर द मैरिज, देन आल्सो इट्स कूल कि ये वो थिंकिंग है जो मैं कूल हो रहा है उसके बारे में, तो दैट्स अच्छा है. बट दैट वाज नॉट द केस. वो नहीं शादी करता था और आगे 1-1.5 साल में he had a baby, he bought a house, he bought a car. ये सब अनाउंसमेंट हमें पता चल रही है कि ये ठीक है, ये लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है. और अभी रिसेंटली वो बोल रहा है, oh yeah, I finally proposed, now he's getting married. And then we had to ask on he was getting married to the same girl. But एकदम ये प्रोसेस जो उल्टा पुल्टा उसने किया है, ये everyone was so cool around it. I am also very cool about it, but something that I had to get used to and not be so uncool and ask कि शादी कब कर रहा है, अरे उसकी मर्जी. Also, congratulations. Keeping a tab on him all this time is the most Indian thing that you can do, and you did it. He's a friend. He's a friend. He was in the same Indian uncle thing. So going forward, my next question would be, obviously, when we go out, we are also looking and seeking a few privileges that come from, a developed nation. And because both of you have gone to developed nations, I wanted to know what are a few of the privileges that you got accustomed to, which you did not realize at first that you even needed them. But now that you have them, letting go of them would be a little troublesome and a little difficult for you. And also, while you tell me that, I know even though like luxuries of home are very precious. So when you left home, obviously there must be some luxuries that you let go of. Be it just the fact that you're living alone and not every one of the families there to support you or anything else. So if you could tell me that also. So I think I'll begin with कि मैं इंडिया में क्या luxuries छोड़ के आई थी, because like it took me so many years to
कॉम्प्रोमाइज कि ये सब मुझे नहीं मिलेगा और मुझे खुद ही करना है। सो द वेरी फर्स्ट टाइम आई केम हियर, मुझे पता था कि मेरे पास कार नहीं होगी, बट मुझे नहीं पता था कि कार और या फिर पापा का इधर उधर लेके जाना इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। लाइक यहाँ आके ग्रोसरीज, ओके लीव इट अबाउट कार, ग्रोसरीज तो हमने कभी की ही नहीं है ना इंडिया में, लाइक आता ही नहीं था करना। तो खुद लेके आना है, लिस्ट बना के जाना है। एंड देन मेरी सिस्टर थी तो लकीली वो मुझे ले जा, लाइक मैं उसके साथ रहती थी, शी हेल्प मी थ्रू दिस। बट मैंने अपने फ्रेंड्स को स्ट्रगल करते हुए देखा कि मतलब राइड मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कोई लेके जा सकता है कि नहीं, बस में 5 बैग्स लेके चल रहे हैं ग्रोसरीज के जस्ट टू गेट फूड। और आई फेल्ट लकी एट दैट टाइम कि थैंक गॉड मेरी बहन इधर है जो मुझे लाइक खाना दे सकती है, एटलीस्ट ग्रोसरीज ला के दे सकती है और मैं जाके ला सकती हूँ। सेकेंड थिंग वाज क्लीनिंग, लाइक मतलब डिपेंड करता है आप कैसे किधर से हो, आपके कितने मेड्स है घर में, कौन काम करता है। बट इंडिया में हम लोग लाइक कभी ऐसे सफाई झाड़ू पोछा तो कभी नहीं किया है ना, लाइक छुआ भी नहीं है, अनलेस कि कभी मम्मी को हेल्प करना है और आंटी नहीं है ये काम करने, एंड यू डू इट। बट it was an everyday thing here, like vacuum करना है। and you can obviously call cleaning services but they're expensive। जब आप स्टूडेंट होते हो आप नहीं कर सकते, मतलब मैंने कोशिश की, मैंने 1-2 जगह कॉल की, I was like ओ ये साफ करने कौन आ सकता है, बट नहीं, like it was too expensive, $100 an hour मैं नहीं दे सकती थी उस टाइम। so I was like okay खुद ही करना पड़ेगा। so that was one thing। that then the culture, so Diwali are you know how we all get excited, अगले हफ्ते दिवाली है। so I was used to that, like हर साल दिवाली आ रही है, पहले से एक्साइटेड है, डेकोरेशंस कर रहे हैं। इधर you don't have somebody to share that with, because even though I have South Asian friends, but Indian honestly मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत, और जब मैं आई थी तब तो थे ही नहीं, मतलब तब तो मैं ढूंढ रही थी फ्रेंड्स, तो there was nobody to talk about दिवाली कि ओ यार दिवाली आ रही है, नए कपड़े पहनने या ट्रेडिशनल कपड़े पहनने, कुछ था नहीं। so I felt like left out, like बहुत मिस आउट हो रहा था। एंड I was homesick कि किसी तरह मैं दिवाली पे घर चली जाऊं, because that's big। Having family around, you can come home and cry, like talk about anything else, like especially with my mom, like I miss that कि रात को लेट तक बैठ के डिस्कशन चल रहा है कि ये हुआ है वो हुआ है। यहाँ पे आके फोन पे I tried, it wasn't the same। it was about खाना खा लिया, हाँ खा लिया, like normal conversation। it was never like कि चल क्या रहा है इधर, I couldn't, like even if I wanted to cry I couldn't। and that was one thing that changed in me कि शेयर करना भूल गई, कॉन्वर्जेशन करना भूल गई कि मुझे अपने फील क्या हो रहा है, लाइक I had to keep it inside। so and accepting that was big, क्योंकि मोस्टली क्या होता है लोग पहले साल में वापस जाने की करते हैं, so they go back because they're like नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, but you have to actually try and survive। and now I'll talk about some of the good things जो इधर के privileges है, जो now when I come back home 1 महीने से ज्यादा हो जाता है तो मुझे होता है यार मैं वापस कब जाऊंगी, like मुझे वापस जाना है, because इधर everything is so independent। it's not even about freedom के बहुत pros and cons दोनों है, but it's more about independence कि okay मुझे ये इस टाइम करना है तो मैं खुद जाके, if you have a car, it's not that difficult to have a car here अगर आप जॉब कर रहे हो। इंडिया में क्या होता था, सेफ वाली चीज बहुत आती थी कि ओ सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम लड़की हो, सेफ नहीं है। सो दैट बॉदर्ड मी। जब मैं वापस आई रात को 8 बजे घर आना, 9 बजे, या फिर किसी फ्रेंड को बोलना कि प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो अगर 10 बजे तक बाहर रखना है, मैं खुद कहीं नहीं जा सकती। इंसिडेंट होते हैं इधर भी, ऐसा नहीं कहूंगी कि हम परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, देयर आर थिंग्स दैट हैपन, बट बहुत रेयर। you probably stopped at a very wrong place अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। so and other thing was clothing। यहाँ पे हम कुछ भी पहन के बाहर निकल, I don't know अभी चेंज हो गया और शायद, क्योंकि मैं बहुत जल्दी 6 years हो गए मुझे इधर आए हुए। so I think India is advancing pretty fast, like clothing wise change हो गया है, freedom ज्यादा आ गया लोगों को। but जब मैं इधर आई थी तब मुझे यहाँ पे extra freedom था because I felt safe। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में कमेंट्स करते थे कि, and they are wrong because that's not on girls कि okay ये कपड़े क्यों पहने, वो कपड़े क्यों पहने। इधर nobody does that, like कोई भी नहीं करता ऐसा, like so ये सब चीजें। and then मुझे इंडिया की ड्राइविंग नहीं आती, लेफ्ट इन साइड नो रूल्स, और मुझे ये सब समझ में ही नहीं। लाइक पापा, अभी मैं वापस जाती हूँ, पापा ड्राइव कर रहे होते हैं, मैं चीख रही होती हूँ गाड़ी में, आई एम लाइक यार ब्रेक मारो, ये करो, एंड ही येल्स एट मी, इज लाइक
तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, मुझे आती है इधर, एंड आई एम लाइक मुझे स्ट्रेस हो रहा है, लाइक मुझे अब एक्चुअली स्ट्रेस होता है गाड़ी में बैठ के, बिकॉज कहीं से भी लोग निकल रहे हैं, लेफ्ट ले रहे हैं, राइट ले रहे हैं, नो इंडिकेटर. सो ये सब चीजें जब मैं देखती हूँ, देन आई फील लाइक यहाँ पे लाइक आई एम बेटर हियर, बिकॉज मुझे यहाँ ड्राइव करना आता है, मेरे को फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है. तो आई थिंक these आर द मेजर पॉइंट्स दैट आई थिंक यहाँ के प्रिविलेजेस हैं, और पहले मैंने वहाँ के मेंशन किए. Sarthak? Have you lived in Delhi? नहीं, that's No. another Where, thing. No. where have you lived? देहरादून. Okay, why North India? Because कुछ चीजें वो very specific to North India जो कि मुंबई में I think अभी हो रही हैं कि people are going out anytime, wearing anything, Right. and Yeah. गाड़ी का तो नहीं बोल सकते, पर कुछ चीजें सिटी ही अपनी थोड़ी सी गड़बड़ है. मुझे बुराई नहीं करनी दिल्ली की क्योंकि उसका नाम ऑलरेडी बहुत खराब है, पर नहीं दिल्ली सही है, दिल्ली बेस्ट है. कनाडा और मुंबई के बीच में जो भी मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ ना, कि देखो कितना सेम है. ओके. और दिवाली, इनफैक्ट दिवाली वाली चीज से मुझे भी एक चीज याद है. कनाडा में शायद इतना ऐसा वाला कल्चर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम सो मेनी कल्चर्स. ये इंक्लूसिव होने के चक्कर में मेरे जो यूके ऑफिसेज हैं उसमें भी एवरीवन इज ट्राइंग टू काइंड ऑफ सेलिब्रेट दिवाली की. स्पेशल मेन्यू है फूड का, क्योंकि दिवाली ऑफ कोर्स छुट्टी नहीं दे रहे, पर जो हमारी डेस्क है उस पे एक छोटी सी वो लाइट, क्या कहते हो, लाइट्स की लड़ी, वो हमारी डेस्क पे एज अ गिफ्ट आई हुई है पूरी टीम के, नॉट जस्ट इंडियन पीपल, पूरी टीम के, क्योंकि दिवाली है. एंड ईद इज आल्सो सेलिब्रेटेड लाइक दिस. तो कुछ चीजें ज्यादा इंक्लूसिव है यहाँ पे. एंड हाँ, Which is a little funny क्योंकि कई बार in India, living in India, we ourselves are not that inclusive of other festivals that much from different parts of India. Like Delhi में अगर हैं हम, and we will Right. not be that inclusive about Onam or Pongal. That's Exactly. because we are थोड़ा सा racist also ना. And there's so many, we aren't. There's so many festivals to celebrate. उसमें तो कोई फिर लिमिट ही नहीं रहेगी. Okay, privileges. First is the obvious one, work-life balance, जो कि तुम expect करके आते हो, and which was very much true as well. यहाँ पे people really respect your time, your family and your health. तो 6 बजे के बाद अगर तुम ऑफिस में रह रहे हो तो it's not seen as you working hard, it's seen as you not being able to manage your time effectively. तो वो बैड लाइट में देखना काफी अच्छी चीज है, बिकॉज अब लोग जबरदस्ती नहीं बैठे 6 बजे. पीपल स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट 8 o'clock, स्टार्ट 7 o'clock if you have more work, but end it by 6. That's the idea. And then go back, do exercise. और यहाँ पे जो एक वियर्ड चीज है, लोग लेक के बाहर बैठ के बतख देख रहे हैं सब लाइन से. एवरीबडी समर्स में बैठे हुए हैं, बतख देख रहे हैं, पता नहीं इतना टाइम कैसे है. इट्स जस्ट फनी. बियर्ड लो हाथ में, बतख देखो, अरे कर लो यार. तो एंड देन देयर आर सम फनी मैनेजर्स एज वेल. फनी मतलब काफी अच्छे मैनेजर्स एज वेल. तो एक दूसरी टीम में एक मैनेजर था जो हर थर्सडे पूरी टीम को बोलता था 5 o'clock, कम ऑन लेट्स गो हैव सम आइसक्रीम. पूरी टीम एक साथ नीचे जा रही है, सबको आइसक्रीम खिला रहा है, बियर खिला रहा है. थर्सडे. तो ये चीजें बड़ी कूल और अच्छी है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. एंड ये आई थिंक आई विल मिस एज वेल. दिस इज अ प्रिविलेज दैट आई डोंट वांट टू गिव अप इन इंडिया. आई एम ओके स्टार्टिंग एट 7 o'clock, 6 o'clock in fact, पर मेरे को शाम को 6 बजे फ्री कर दो, unless until कुछ ज्यादा ही फट गया है, कुछ खराब हो गया. एंड another privilege is access to Europe, क्योंकि जैसे हम दिल्ली में फ्राइडे को सोचते हैं कि कल ऋषिकेश जाना है, यहाँ पे लोग उठ के एम्स्टर्डम, पेरिस चले जाते हैं. नॉट इवन दैट एक्सपेंसिव, 1500-2000 की टिकट होती है. यू आर देयर, वीकेंड स्पेंड करो और वापस आ जाओ सुबह सुबह ऑफिस के जस्ट पहले. बैड थिंग्स नथिंग एज सच. मतलब आई थिंक शी इज कवर्ड की थोड़ा सा फेस्टिवल्स में कभी कभी छुट्टी नहीं है यार. दिवाली की छुट्टी तो चाहिए एटलीस्ट, या फिर ओवरऑल जो माहौल बन जाता है अराउंड दिवाली, या दे हैव इट अराउंड क्रिसमस, वो यू मिस. या घर की मिठाइयाँ, राइट? घर की मिठाई, हाँ वो तो यहाँ पे मिल जाती है. साउथ हॉल के बारे में सुना है? पर घर की जो होती है, जो घर में मम्मी बनाती है, वो नहीं मिलती ना. हाँ वो सब गौरी मम्मी नहीं मिलती बस बेसिकली. So you talked about work ethics right now, and this is something as a working professional I have felt a lot because in India people don't respect work ethics as much. I don't know if it's because we are a developing nation and because that thing is ingrained in us, or because there is lack of opportunities and a lot of people we end up competing with each other so much.
that eventually we end up not respecting ourselves and others' time. However, yeah, because I've had clients in UK and even US, and I've seen how so a lot of times stakeholders from that side, until unless they were Indians, of course, they were also very respectful for our times, as in they used to tell us not to push beyond ours and everything. So, is it true that you already said that it's true that the work ethics over there is good? So, how different it really is, and like what can we learn from there, or what can we adopt from there, and whether it will work for us or not? Like, what are your thoughts about it? So, if someone is gaining, so कोई तो lose भी कर रहा होगा. So, of course, the fact that people here are respecting their time, not pushing beyond a particular time. The people getting affected are people in India, because then they have to push or take calls at unreasonable hours, Yeah, because वो exactly. फिर UK के उसमें तो some, if you have to keep working globally, तो किसी एक को तो adjust करना पड़ेगा. But the problem is सिर्फ एक साइड क्यों एडजस्ट करे जा रहे हैं, मतलब इंडियन से क्यों एडजस्ट करे जा रहे हैं, यूएस वाले क्यों नहीं कर रहे. ऑफ कोर्स कुछ कंपनीज में हो रहा है, मेरी कंपनी में भी हो रहा है कि someone is taking a call at 11 o'clock, या फिर सुबह उठ के 5 बजे कॉल ले रहे हैं बिकॉज वो इंडिया टाइम के हिसाब से मैच कर रहे हैं. दैट इज ग्रेट, बट दैट शुड हैपन मोर ऑफन. ये पहले से जो हमें इंडियन माइंडसेट है ना कि दब के रहने वाला एंड नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, ये थोड़ा सा गायब हो जाना चाहिए. एक तो इतने सारे लोग हैं चीप लेबर विच यू कैन से, उसकी वजह से जस्ट टू एडजस्ट, गेट दैट अपॉर्चुनिटी, गेट दोस डॉलर्स इन योर अकाउंट, तुम किसी भी चीज के लिए मान जाते हो, कोई भी वर्क टाइमिंग के लिए कुछ भी. वो चीज वो स्टैंड लेना पड़ेगा, आई थिंक. Also, it's high time that we start pushing for this. We've been in silence for a very long time, and we don't raise it as much because I don't know, we feel obliged to work that much or push ourselves. Right. And also, when you're like, for us, we were straight out of college into an office space. That thing about अभी मेहनत कर लो ना, बाद में वो नहीं होगा. अभी नहीं मेहनत करेंगे तो कब करेगा? We are young right now. अभी तो सारी एनर्जी देनी बनती है. But the thing is, that's the thing that you need to learn. That because you're young, you are forming habits that will go on forever. So why not start managing your time and respecting your time from the get go? For me, यहाँ पे थोड़ा contradiction है with what Sarthak said. You know how he mentioned कि 6 बजे के बाद if you're there, you're not working hard enough. So you get paid for every extra hour you work. So that's one good thing. तो बुरा भी नहीं लगता है sometimes, you know, you're there to make money and you're like, okay, you know, मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मुझे इसके भी पैसे मिल रहे. They're not taking me for granted. Right. You have to be there at 6:30 a.m. जितना जल्दी आप जाओगे, उतना अच्छा वो आपको मानेंगे, you know, like there was this judgmental thing. People looked at you if you walked in the office at 9 because उनके लिए वो too late था. और अगर आप शाम के 7 o'clock तक बैठे हो and company को charge कर रहे हो, that was a good thing. You are a hard working person. But I talked to my cousin in India and वो मुझे बताती है कि you know nobody asks you कि आपको 8 बजे तक रहना है कि नहीं रहना है काम पे. आपका काम है, आप बैठो. I don't know how true this is क्योंकि मैंने कभी इंडिया में काम नहीं किया, but यही सब सुनने को मिलता था. It's very true. कि there is no हाँ कि आपकी फैमिली की वो नहीं होगी कि आपको फैमिली को टाइम देना, आपके टाइम की कोई रिस्पेक्ट नहीं. आपका काम है, आप करो वरना फायर हो जाओगे. Yeah. So that was the difference. और secondly, I think one of the major one was respect. कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब आपके टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं in a way. Like हर कोई प्लीज बोल रहा होता है, हर कोई आपसे पूछ रहा होता है. So that was another thing that I feel कि यहाँ पे different है. Like and because of that, हम लोगों को honestly आदत होती है, like you mentioned, कि हम लोग अपने लिए stand नहीं लेते हैं, right? इंडिया में because हमें सिखाया ही नहीं जाता. So either we as Indians or like even like Pakistanis or like Asian people are considered hardworking. Like मेरी company में they love to hire Indian people because उनका experience इतना वो रहा है. You know why? Because हम लोग कुछ बोलते ही नहीं अपने लिए. अगर हमें काम दिया जा रहा है and if it's extra for us, हम कभी जाके बोलेंगे नहीं कि I can't do this. हम करते रहेंगे because हमें सिखाया ही नहीं मना करना. हमारी फैमिली को हम थोड़ा सा मना करते हैं, वो बोलते हैं तुम छोटे हो, you know, you have to do this. It's your job, it's your responsibility. So हम वही mindset लेके इधर बैठे होते हैं, तो we automatically work harder than other people. क्योंकि
not that हम hard working, हमें सिखाए वो, हम मना करेंगे ही नहीं. Like we cancel on our own family, we cancel on the people, on our friends because हमारी job important है. So that's one of the major things that I found different, and I couldn't adapt in here. मैं अभी भी इंडिया जैसा ही सोचती हूँ कि नहीं, मैं करूंगी, मैं मना नहीं करूंगी. I'll say yes to everything. And every time, हर बार the situation can't be ऐसा कि you have to do it now, otherwise कुछ खराब हो, कुछ major effect हो जाएगा. Things can be pushed. It's just about us in general Indians managing it and saying कि हाँ आज नहीं हो सकता, कल होएगा, चलेगा. And I think तो 4-5 साल काम करने के बाद we learn that. Maybe this confidence will only come once our nation progresses. US में people are not working hard. They are also working till 10 or 11. But because they want to, because they can on that day, they are working. And यहाँ पे भी people work late. But it's their choice. The point is, you should have a choice, or you should know what you're getting into. India में we don't know. कौन सी कितनी सारी ऐसी companies हैं who work with US or UK clients. Your working hours are 12 o'clock to 10 o'clock रात को. And the reasoning your boss gives you is कि यार तू घूम फिरा के 9-10 घंटे काम कर रहा है ना, so what's wrong in, like, we start so late, so what's wrong in you going home at 10? Yeah. The problem is, when I took up this job, you didn't tell me that I'll start at 12 and my day will go on till 10 o'clock. It should be in the contract अगर ऐसा है, because सब कुछ change हो गया इसकी वजह से. I have to plan my life differently, and it's a big sacrifice अगर तुम इतना late तक काम कर रहे हो, या फिर तुम अपना schedule change कर रहे हो, या अपनी family के साथ time नहीं spend कर पाओगे. तो वो अगर contract में होना चाहिए, फिर it should be explicitly stated. Why is that not happening? तो तुम choice दे दो ना बस बंदों को. या फिर in general we should have that mindset. We should be taught कि we need to ask for that choice. That's the only difference. Work also यहाँ पे midnight shifts is a thing, okay, and this just came in my mind. So they get extra 1% compensation if they actually, for some companies, not talking about all the companies, if you actually work midnight, which is 11 to 6 a.m. in the morning, because तुम अपने सोने के टाइम पे काम कर रहे हो. So I don't think that thing exists in India कि oh midnight is like he mentioned कि कर तो तुम 10 घंटे ही रहे हो ना, क्या फर्क पड़ता है, but they actually do not realize कि वो आपके सोने का टाइम होता है. So yeah. Yeah, no, it makes sense. And anyways, any kind of growth without a peace of mind it won't feel like a growth. If we even reach to that end point and by the end of it, we have exerted ourselves so much, we will not be able to enjoy that progress or growth. And we will not have the right perspective and foresight for new things as well. We have all seen our fathers drain themselves so much and the kind of toll it has on them over the years. So if not us, who will ask these questions? Exactly. What are some of the biases and misconceptions against Indians that you have faced yourself? One thing that I commonly hear is that people outside perceive that all Indians are very smart people. And I remember this instance from Vidas ki comedy stand-up ka ek cheez ki, like, there are more smarter Indians because there are more Indians, but it doesn't mean every Indian is smart and you will meet a lot of smart Indians. So statistically, that's not true. So what are these misconceptions and biases that you have faced in your significant lives, Sarthak? Okay. Biases. One, smart, more than smart, hardworking, and adjusting. Second, biases तो नहीं, पर एक जोक बना था स्टार्टिंग में, तो मुझे नहीं पता था कि Indians typically agree with a nod, and the nod can be weird as it can be you closing. Remember, imagine Pankaj Tripathi closing his eyes and saying, okay, like, thing you want to give the other person is, I've got this, मैं कर लूँगा, I've got this, या फिर just console someone. So we nod. This only Indians do. I didn't know that. I didn't know कि मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ. तो ऑफिस में, मीटिंग्स में, बहुत अच्छी फॉर्मल मीटिंग चल रही है, उसमें आई वांट टू एट द एंड ऑफ द मीटिंग से कि हाँ मेरे को समझ में आ गया, मैं कर दूंगा, तेरे को 2-3 दिन, एक हफ्ते में मिल जाएगा काम. और उस टाइम पे मैं साथ साथ नोट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. तो person sitting in front of me says, what is it? Is it a yes or a no? It's horizontal, sideways, it can be anything. So this only Indians do, but can't get rid of it. Yeah. And एक छोटी सी चीज, they think that we can handle a lot of spices, which we can, because these people, for them pepper is spice. यार उनको बोलो कि spicy ना दो, pepper डाल देते हैं. So I think
again misconception नहीं है, but this they almost expect from every Indian, and it's very true. Because अगर हम इंडिया में भी कोई स्पाइसी नहीं पसंद करता, he is still eating much more spicy food than pepper. किया फिर पेपर तो ऑमलेट पे डाल देते हैं हम. अच्छा सॉल्ट एंड पेपर मतलब ब्लैंड इंडिया में. Yeah. And Gauri, what about you? सबसे मेजर so this hard working and smart ये सब तो है ही, like you know they often think कि तुम्हें तो सब कुछ आता होगा, तुम लोग मैथ्स में बड़े तेज होते हो, कैलकुलेशन बड़ी अच्छी करते हो. That's not actually true. हर इंडियन मैथ्स में तेज नहीं होता, बट उनको लगता है हम since हम कैलकुलेटर पे 2+2 नहीं करते तो हम बहुत तेज है मैथ्स में. Because इधर I've seen people, अगर उन्हें like 40 + 78 करना, they would open their calculator. हम लोग अपने दिमाग में कैलकुलेट करते हैं. So that's what makes them say कि वो तो हमें मैथ्स आती है. And then second thing is curry smell. So I did not know for the longest time कि curry smell is a thing here. Like curry की भी smell आती है हम में से. So initially जब हम लोग इधर आते हैं, अब मुझे नहीं पता इंडिया में हमें वो स्मेल क्यों नहीं आती, बिकॉज प्रॉब्ली सब लोग करी बनाते हैं, सब लोगों में से वो स्मेल आई डोंट नो. इधर करी की स्मेल वाज अ बिग थिंग. लाइक अगर आपने खाना, सो इनिशियली हम लोग खाना सब फ्रेंड्स लाइक जितने भी इवन पाकिस्तानी पीपल फेस दिस, इंडियन पीपल, एवरीबडी, कि खाना बना के कहीं गए, हमारी जैकेट स्मेल लाइक अनियंस और लाइक आवर हेयर स्मेल लाइक अनियंस. आई डोंट नो व्हाई. और हमें नहीं पता था कि यू नो ये स्मेल maybe it's a closed apartment or something or smell आ गई है, but हमें नहीं पता था हम में से smell आ रही है because we were used to that smell. Yeah. But actually some of my white friends, they did not get offensive with it, but they started pointing us out, and I really realized कि they were not wrong. Like जब हमने अपनी jacket smell की, smell आ रही थी, वो बस हमें in the moment smell नहीं आती थी because we were used to the smell. So that was one of the bias, like they think कि Indians है तो करी की स्मेल आ रही होगी, because most people अगर वो 4-5 साल भी यहाँ रहते हैं, they do not learn. क्योंकि हमारा अब कॉन्सेप्ट था sometimes you have to change yourself. हम क्या करते थे, कुक करने के बाद शावर कर लेते हैं because we know आएगी स्मेल, और या फिर अपनी जैकेट साइड पे कहीं रख दो, यू नो, रूम्स बंद कर दो because रूम्स में भी स्मेल आती है, कपड़ों में स्मेल हो जाती है and it doesn't go. So we shut the doors, but some people do not practice that, and this is one of the major biases here that stays. Like सबको लगता है कि Indians smell like curry, like they just smell like curry, and it's actually very like offensive if somebody says that to you. But then yeah, you go like ahead. our curry. In the end, you like Indian cuisine too. Yeah, but they love Indian curries, but they don't want to smell it. हाँ. और even when she says it, मुझे भी अजीब लग रहा है कि शायद अगर करी स्मेल आ रही होगी तो अजीब होगा, पर मेरे को अभी तक नहीं पता था ऐसा कुछ है. That's so racist. इधर तो है, that is racist actually. Yeah, like है ऐसा. और like अब तो यहाँ पे like इंडियन जो यहाँ पे इतने टाइम से रह गए हैं ना, उनको भी यही हो गया है कि कोई और इंडियन में से करी की स्मेल आ रही है, they actually like they, even if they don't say it, they're gonna run away कि like ये कल्चर ने सिखा दे. इंडियंस को तो बहाना चाहिए दूसरे इंडियंस को नीचे दिखाने का. Exactly. NRI साले. वो भी है. Especially the Indians who go there ना, जो पढ़ के भी जाते हैं, and like I am so sorry that I'm saying this, but my Indian stakeholders were the worst too. They were the worst people to work for. Exactly. I would prefer an American stakeholder. I'm not saying all American stakeholders were good too, but True. Yep, Indians ने you're ही right. खराब कर रखा है वो जो यहाँ हम पे वर्क भी. लाइफ बैलेंस सब कुछ की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है they're ना. like कि we work so hard to get there. How are you sitting there and not doing anything? I don't know if that's Exactly. or they think कि हमने भी तो किया यार, like तुम हम भी भी तो कर लो. इंडिया में हाँ. करते थे ना 10-11 बजे तक, तो क्या. And you in fact start at 1 o'clock तो. I'm so glad I do not have any Indian on my team. That's true actually. Indian boss होना मतलब सब expectation ही बदल जाती है इधर work life की, फिर आप इंडिया में ही आ गए काम करने. So yeah, that's actually true. Or another one was I think a nod wala. So this was a funny incident with me. Like there is this मेरी internship में मेरा एक boss था. He was actually, he tried to be funny. Like sometimes he would get offensive when he thought he was funny, right? So आप नहीं offend हो सकते, but yeah, this nodding thing, he would come to every Indian because उसके past experience में वो nod रहा होगा, you know, no, yes. So he'd be like, okay, like he would nod his head and say okay in a weird Indian accent.
and make fun of Indians because nodding is a thing in our culture. Or he would say yes, no, and he would keep nodding like all day. And it annoyed me because okay, हाँ हम लोग हाँ बोलने के लिए भी same nod करते हैं, ना बोलने के लिए भी, but with bringing it up with a weird accent, you don't need to do that. Like Indians don't even have that accent, the one that he did. So I was like, okay, that's a lot, but you have to sometimes. You can't fight with everybody, but that's one of the other biases that still exist. Was it the stereotypical South Indian accent which died? Yes. 100 years Yes. ago? Okay. Yes. This is Steve Carell from The Office and the episode Diversity Day. Where he's talking to Mindy Kaling and he's doing just this. Have some curry, you want some curry? Okay, no. भाई तो सब इसको मजाक उड़ाते बिग बैंग थ्योरी में भी यार इट्स स्टिल हैपनिंग बिग बैंग थ्योरी कितना रीसेंट है उसमें भी मजाक उड़ा रहे हैं Raj was very annoying and it was Raj and his parents yeah everyone even his sister I don't know I think representation now of Indians is much better but usme bhi they are showing it second generation Indians not first exactly so like what why thank you so much guys and like throughout conversations what I could gather was there is no limit to which you can expand your mind and sort of explore new things and introduce new things to yourself and I guess the one thing that really everyone needs if they're going out is a willingness to stay open willingness to learn new things and also about the perception of our country or things like going somewhere for the opportunities and for your own growth is a good thing but having something in mind just to escape your homeland might not be the best thing to do because a lot of your struggles were very similar to people who move out of their home and like people who've just gone out of their families obviously a lot of them were obviously new according to the different nation that you were going but then in a lot of sense the struggle was universal as well so thank you so much for giving us that insight and thank you so much for coming on our podcast this has been wonderful and we would love to have you back thank you guys and because the conversations never end and Vijay do you want to say anything No, just thank you for coming at one time and coordinating between 3 time zones was pretty difficult, but it happened and I'm really happy about that. Yeah, it's so wild. Thank you. Just a time check. So it's 8 p.m. in India. Yeah, it's 8 p.m. in India. What's the time in London right now? 2:30. And Gauri, what's the time? 9:30 a.m. Okay, so this has been a wild ride, I must say, guys. We made it. We made it through. We made it. Yeah. Yeah. Thank you so much, guys, for listening. And please give us your suggestions. Your responses to all our episodes is really nice. But we would like to know more topics from all of you. This is your platform too. And won't you just love it if we would scrutinize a topic or discuss about something that's already going on in your mind? And you would probably hear more perspectives on it. So do give us your suggestions on latenightRant01@gmail.com. Or you can also give us your suggestions on our Instagram page at Late Night Rants. So thank you so much for tuning in and we'll see you soon. Woohoo! More bonfire!